Okay, hello everyone. So today we are going to do application of differential equations, second order differential equation. Before continuing, make sure you have studied how to solve homogeneous differential equations with three roots, distinct roots, complex roots, and repeated roots. So make sure you have studied these and solve one or two problems for each of the three roots. So I'm talking about homogeneous differential equation, not non-homogeneous differential equations, right? So you can go to the YouTube channel and find out uh, the videos where you can find one or two problems for each of the roots, right? Number two is I am requesting you again to like the button. Like doesn't mean that you are appreciating me or you're giving me credit for the very good video, but just it shows me that you are watching the full video, right? And if you are not watching full video and also commenting on it just to get the attendance going, then you can press the dislike button. Dislike doesn't mean that you didn't like the video or you didn't understand the video. Dislike just means that you are not watching the full video. So at least I could know. The last time the videos which I watched and counted the number of likes, there were only 14 likes and one or two dislikes. It's okay, you can dislike as many as you like, but issue is that I can only understand from the count that only 14 people have watched the video full out of 80 to 90 students. That means, I mean, most of you are just commenting, just taking the attendance. So if you have any issues, if for those especially who are disliking the video, I just request them to, if you have any issues, then please write in the form which I already given, and you can ask the question, or if you have any other issues except understanding, then you can also raise that in the forum which I've already shared with the CR. So kindly please click the like button. I would, if you think that I'm like, just only shows I'm saying that it only shows you that you are taking full interest. And number three is of course, when I finish this lecture tomorrow and day after tomorrow, I will ask the three of the sections to come right online and discuss the videos up till now, right? So today is the video, please watch it. And if you have any questions, you can raise it on the form, which I already provided, or you can ask tomorrow. So please make sure you watch all of them, okay? Okay, so let's start with the application. It's an important one. You can also find it in the 17th chapter, which I've already provided. Let's start with it. Okay. Okay, so applications of second order differential equation. So today, the application of second order differential equation is related to spring mass system. It's a mechanical system, right? Not electrical system. In the first order system, we have already given you the example of electrical circuit, simple electrical circuit, RL and RC circuit. But in second order, I'm starting with the spring mass system. There can be other example of second order differential equation related to the electrical circuit, like RLC circuit, right? If you have time, we can go with that explanation. So first is mechanical system, right? To understand the application of second order differential equation. So it's better to learn the differential equation with application, so that you can relate and you can understand exactly the meanings of the coefficients and the oral system, right? And its behavior. What does it do in real life? Okay. So spring mass system is basically, it's a mechanical system, right? Mechanical system. Let me write it down here. It's a mechanical system. So we are studying mechanical system. It's a foundation of a mechanical system, right? Where you can understand the motion of a spring, right? So what we are going to do is, let me just remove it first.
We will model the vibration or a motion of a spring attached to a rigid support. So there's a spring which is attached to the, let's say, ceiling, which has a strong support, and it's fixed. One end is fixed, and the mass m is also suspended on the other side of the spring. And when you put the mass on the spring, so it is going to stretch, right? Stretch it to some length. This length is s. Okay, so when you attached it to the spring, after after that time, it's going to go to the equilibrium position. So to show you the equilibrium position, let's see the first figure 1. So this is a support, rigid support, and the spring is attached on one end. The other end of the spring is mass is attached. So initially, when we have nothing attached, mass not attached, so the situation is like this, right? And then at some point, you put a mass, you attach a mass here, and it is going to go down, right? It's going to stretch more with the mass. So how much it has traveled, how much it has stretched is given by S. So S is just distance which the spring has stretched after the mass M is attached, right? So you can see that this length is S. S is the distance, right, from the spring without mass and at the equilibrium position when after the mass is attached. So equilibrium means that the mass is attached and then after some time it is at the rest position, right? So it is at the rest position. And this rest position is actually denoted by y equal to 0. Y is actually a displacement. This is the y is showing the displacement of the mass, right? Here there's no mass, and after putting the mass here, it stretches up till this point, right? Y equal to 0. It is at the rest. It's not moving. So this is what happens when you attach a mass here. So we are studying what? Mechanical system, which consists of spring mass, right? So what we are going to do now, we will model the vibration of a spring. So we will understand how we can model with the differential equation the movement when you attach the mass, right? With the second order differential equation. So first we have to understand the forces which act upon it, right? First of all, look at this position. Okay, so let me just first explain this figure 1. How can you explain the forces for the figure 1? At equilibrium, right? It's at equilibrium because it's not moving. So there's a tension force in the spring. So you must have studied the Hooke's law. Hooke's law is F equal to Ks. K is the spring constant, and S is the distance which it has stretched, right? When your mass is stretched, mass is put on the other side of the spring, and it has stretched. So from unstretched to stretched position, and the distance it covers is S. This is given by Hooke's law, right? And then there's another force acting on it. Force due to gravity on the spring is mg, right? So at equilibrium, there are two forces, right? The first force is the gravitational force. Other force is the spring force, which is given by Hooke's law. Hooke's law is F equal to Ks. You can look at the Hooke's laws anywhere if you want to revise in Google, so it's very easy to understand. So Hooke's law is mainly deal with the position of the spring, how much it has stretched. So it depends upon the force. Force is directly proportional to the amount it has stretched, right? So at this point, Ks equal to mg because both forces are equal, right? At equilibrium, right? One force is by the spring, which is denoted by Hooke's law. Other is the downward force. So at this point, two forces acting opposite. So
That's why they are equal. Now what would happen? Now this is what would happen if in figure 2, if I stretch from the equilibrium position, I try to stretch the mass more downward position till this start point. I stretch it, this mass, and let it go till start position and release it. Once I release it, so it's going to, what do you expect? It's going to vibrate, right? It is going to oscillate. And at some point, which is called y, we want to find how much it has covered, how much distance has covered a position after release. So we have stretched this mass and stretches to till this start position and release. And at some point, which is anytime t, we want to find how many forces are acting on it. So based on these forces, we are going to have a second order differential equation, right? So हमने क्या किया है, let me explain it in Urdu, कि ये मास हमारा इक्विलिब्रियम में था, हमने इसको खींचा स्टार्ट पोजीशन तक, फिर रिलीज कर दिया, ठीक है। स्टार्ट पोजीशन हमने नीचे खींचा, फिर रिलीज कर दिया। फिर हम देखना चाहते हैं कि इसकी पोजीशन क्या होगी, ये किस तरह बिहेव करेगा एट एनी पॉइंट थी। तो हमने एक पोजीशन वाई हमने कोई भी ले ली, कहीं भी हो सकती है वाई, लेकिन ये इक्विलिब्रियम के नीचे है, ठीक है, जस्ट टू शो दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। तो ये पॉइंट है आपका इक्विलिब्रियम का, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है जब आपने उसको छोड़ा अपने हाथ से। और ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला वाई, वो पॉइंट इट्स एनी टाइम, किसी भी वक्त हमें देखना चाहते हैं कि इसकी पोजीशन क्या होगी आफ्टर रिलीज, एनी बिटवीन स्टार्ट पॉइंट एंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। So there, as you can see, there are three forces: Fs, Fr and Fp. Fp तो आपको चल गया, P means pull, gravitational force, वो mg से पता चलेगी, जितना मास है उस हिसाब से होगी, ठीक है। Fs क्या है आपका स्प्रिंग रेस्टोरिंग फोर्स है, जो हुक्स लॉ से दी गई है। और Fr क्या है, फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होगी ज़ाहिर स्प्रिंग में। तो ये तीन फोर्सेस का एक्चुअली मजमुआ है, ये पिक्चर आपको बताती है क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, राइट। तो अब देखें किस तरह हम लिखते हैं नीचे, कि इस पिक्चर को जरा जस्ट पॉज करें इसको, और जस्ट make sure you have drawn these two pictures clearly, and then you go forward, right? You can pause the video, क्योंकि हम बार बार ऊपर नीचे जाएंगे, राइट। अब आप देखिए, सपोज ऑब्जेक्ट इज पुल्ड डाउन बाय एडिशनल अमाउंट y नॉट। तो हमने क्या किया, वी हैव पुल्ड डाउन द एडिशनल अमाउंट, जितना पुल किया है उसको हमने कहा कि हमने y नॉट खींचा है नीचे, राइट। इक्विलिब्रियम से y नॉट एक डिस्टेंस से एडिशनल अमाउंट डिस्प्लेस किया है, स्ट्रेच किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमने रिलीज किया है। फिर हमें मालूम करना है, वी विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट। अब हमें लेट्स से हमें मालूम करना डिस्प्लेसमेंट क्या है एट एनी पॉइंट, ठीक है, y, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखें फोर्सेस, F इक्वल टू mg, Fp इक्वल टू mg बताया मैंने, Fs इक्वल टू ks प्लस ky। ks क्या है और ky क्या है, अब देखें ks क्या है, आपकी हुक्स लॉ से दी हुई है, प्लस ky कैसे हुई है। सबसे पहले आप इनिशियल देखें, इस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या था हमारा फोर्सेस, इस पॉइंट पे जो हम देख रहे थे ks था ना, जो हमने हुक्स लॉ से बताया था, राइट, ks एट इक्विलिब्रियम। अब मजीद ज़ाहिर नीचे गया है, ठीक है। अब जो मजीद गया है वो कितना गया है, वो गया है ky, ठीक है। तो आप देखें, जस्ट लुक एट दिस वन अगेन, ये आपका s पोजीशन है, ठीक है, और ये पोजीशन क्या है आपकी, y पोजीशन है, ठीक है, ये y पोजीशन। तो क्या होगा, अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे बताएं कि आपकी टोटल जो फोर्स होगी Fs क्या होगी, Fs वो होगी जो जितना डिस्टेंस कवर किया, एक s किया है डिस्टेंस, ठीक है, इक्विलिब्रियम तक, फिर y किया है, ठीक है, ये y आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमने ks प्लस ky लिखा एट दिस पॉइंट, एट एनी पॉइंट t, ओके। इसको मिटा देते हैं, ओके। अच्छा, दूसरी फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। देखो
y क्या है? डिस्प्लेसमेंट, राइट? y इज अ डिस्प्लेसमेंट। सो अगर हम dy अपॉन dt क्या करेंगे? वेलोसिटी होगी, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, डिस्प्लेस हुआ है, dy अपॉन dt, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो dy अपॉन dt फोर्स जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, राइट? तो उसको हम लिख सकते हैं Fr इक्वल टू दिस, सो हम डेल्टा कहते हैं dy अपॉन dt, ठीक है? ये है आपका फ्रिक्शन की टर्म है आपकी, ठीक है? This is called a friction. This term shows that it's a friction term. Okay. तो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी dy अपॉन dt। अच्छा, अब ये हम आपको पता है कि हम नेट फोर्स हम यूज करते हैं, टोटल फोर्स जो लगेगी उस टाइम पर। तो क्या होगी नेट फोर्स? एफ नेट इक्वल टू एफ पी माइनस एफ एस माइनस एफ आर, ठीक है? एफ एस की फोर्स नीचे, एफ पी की फोर्स नीचे ग्रेविटेशनल, बाकी सब ऊपर है, ठीक है? तो ये एफ जो होगी एफ पी माइनस एफ एस प्लस एफ माइनस एफ आर होगी। और बाय न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि आपकी जो टोटल फोर्स होती है अकॉर्डिंग सेकंड लॉ इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए। तो एफ इक्वल टू एम में हमने यहाँ लेफ्ट साइड पे रखा, ठीक है? और राइट साइड पे यहाँ एफ इक्वल टू एम में रखा। लेट मी शो यू क्लियरली अगेन। एफ इक्वल टू एम में ये रहा, ठीक है? नेट रिजल्टेंट फोर्स है इक्वल टू बाकी ये सारी फोर्स है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखी, राइट सर? ऊपर से आप देख लीजिएगा एफ पी किसके बराबर है, ठीक है? और ये एम में ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, क्या होती है एक्सेलरेशन? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इस वेलोसिटी dy अपॉन dt वेलोसिटी है, राइट? दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। y इज द डिस्टेंस, राइट? अगर स्क्वायर होगा तो क्या होगा? एक और ले लो, वेलोसिटी का भी एक डेरिवेटिव ले लो तो क्या होगा? डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हमने इस चीज को एक्सेलरेशन के बराबर लिखा है ए, ठीक है? इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट? तो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोर्स एक्सेलरेशन, राइट सर? ओके, नाउ लुक एट दिस राइट हैंड साइड mg माइनस ks इक्वल टू 0, बिकॉज mg और ks बराबर है इक्विलिब्रियम पे, तो हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है? mg इक्वल टू ks है, तो mg माइनस ks इक्वल टू 0, राइट? एंड देन हम इसको इसको लेफ्ट साइड पे ले गए, ky की टर्म और इसकी टर्म को लेफ्ट साइड ले गए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी md स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर प्लस यू कैन से डेल्टा dy अपॉन dt, ये फ्रिक्शन की टर्म है, प्लस ky इक्वल टू 0। अब आप देखें सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई इस छोटे से सिस्टम में, राइट? m क्या है? स्प्रिंग मास सिस्टम, जो भी हम सिस्टम स्टडी करेंगे उसका कोफिशिएंट है, which is m mass. What is this delta shift? It's a frictional force, constant, ठीक है? What is k? Spring, ये mass constant, ठीक है? इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी का F इक्वल टू के हुक्स लॉ से बताया था। तो आप देखें जो ये जो हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ, उसमें जो कोफिशिएंट होते हैं वो बेसिकली क्या बताते हैं? वो सिस्टम के पैरामीटर बताते हैं कि सिस्टम खुद के मेन पैरामीटर्स क्या है, किससे बना हुआ है सिस्टम। क्योंकि हम मैकेनिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, किससे बना हुआ है? स्प्रिंग है एक चीज, ठीक है? एक मास है, स्प्रिंग को हमने डिफाइन, इसको के से शो होता है उसकी, समझो एक प्रॉपर्टी, ठीक है? और फ्रिक्शन से पता चलेगा जो डेल्टा है, और दूसरी बात क्या होगा? मास से पता चलेगा। तो बेसिकली कोई भी अपने पास अगर सिस्टम आए, सेकंड ऑर्डर सिस्टम आए, बेसिकली वो शो क्या करता है? इट एक्चुअली डिस्क्राइब्स एनी सेकंड ऑर्डर सिस्टम जिसका ऑर्डर सेकंड हो। अब ये y क्या चीज है? y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल तो है, लेकिन ये वो वेरिएबल है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। हम किसको स्टडी कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि पोजीशन जो है, मास जो ऑसिलेट कर रहा है उसका बिहेवियर क्या है। y इज अवर डिस्प्लेसमेंट, राइट? ऑसिलेशन हो रही है, उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है? किसके रिस्पेक्ट से? टाइम के साथ। देखो t क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम क्या स्टडी करें? वी आर स्टडीइंग स्प्रिंग मास सिस्टम एंड इट्स ऑसिलेशन, ठीक है, यूजिंग द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? तो हमने क्या किया? बेसिकली वी हैव मेड अ सिंपल मैथमेटिकल मॉडल, इसको कहते हैं मैथमेटिकल मॉडल,
वो बताता है आपको, डिस्क्राइब क्या करता है, बिहेवियर ऑफ एनी सिस्टम। हमारी सिस्टम क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम। अच्छा, इसमें देखें, इसकी इनिशियल कंडीशन भी हम लिखी है, y जीरो इक्वल टू वाई नॉट एंड y डैश जीरो इक्वल टू जीरो। तो y जीरो क्या पोजीशन है हमारी, जब हमने उसको रिलीज किया, जिस पॉइंट पे हमने स्टार्ट पॉइंट क्या है, जिसको मैंने खींचा, इसको सॉरी इस पॉइंट से मैंने खींचा नीचे इस पॉइंट तक, फिर रिलीज किया, राइट। तो हमारे पास स्टार्ट पोजीशन क्या हुई जब हम रिलीज कर रहे हैं, y नॉट हो गई, ठीक है, जिसको y जीरो का एट जीरो टाइम पे समझो कि हमने स्टार्ट कुछ फंक्शन, कोई सिस्टम स्टार्ट ही नहीं किया। और y डैश जीरो इक्वल टू जीरो क्यों है, y डैश जीरो का मतलब वेलोसिटी, हमारे लिए वेलोसिटी है ना जीरो है, क्योंकि हम इनिशियल पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने y डैश जीरो जीरो रखना चाहिए ना, क्योंकि हम स्टार्ट पॉइंट इस रेस्ट पे है, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ कि आई मीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द कोफिशिएंट्स, जो हमें बार बार प्रैक्टिस आप कर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप कोफिशिएंट की अहमियत तो चली कि किसी सिस्टम से आ रहे हैं, ये आरएल सिस्टम हो या स्प्रिंग मास सिस्टम हो, सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो, कोई भी। तो हम क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं मैकेनिकल सिस्टम, तो इसका मॉडल जो होगा ये होगा, राइट। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब मैं, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट्स पॉज एंड थिंक। आगे जाने से पहले आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप सोचें, if I ask you what will happen if you release the spring mass at some starting point and स्प्रिंग मास, एक आपका स्प्रिंग मास है जो वाई नॉट से आपने रिलीज किया, ठीक है, तो क्या होगा, अब हमें क्या होना चाहिए, जिसमें फ्रिक्शन भी है, थोड़ा सा फ्रिक्शन भी है, तो क्या होना चाहिए। और अगर फ्रिक्शन ना हो, जो सवाल, तो क्या होगा, मतलब एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या करता है, अगर आप खींचोगे तो क्या करेगा, ऑफ कोर्स वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा ना, या ऑसिलेट करेगा, यानी सेम पोजीशन पे ऊपर जाएगा, नीचे रिपीट होगा। और अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, क्या कहता है न्यूटन लॉ, अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, गाड़ी चलती रहेगी, चढ़ती रहेगी, फ्रिक्शन ना हो, चलती रहेगी ना, तो स्प्रिंग भी घूमता चलता रहेगा, ऑसिलेशन। और अगर फ्रिक्शन हो तो थोड़ी देर ऑसिलेशन करके स्लो होगा, और फिर क्या होगा, ऑफ कोर्स रुक जाएगा ना फ्रिक्शन की वजह से। तो जस्ट थिंक अबाउट दिस मोर, ऑल्सो कंसिडरिंग दिस इक्वेशन, राइट। तो आगे जाने से पहले मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस ये mathematical model of a simple spring mass system, and just think about, imagine करो क्या होगा जब we are releasing at some point, okay, so understand this equation also, consider this picture, make sure you are understanding what y not means, right। y is any point जहां हम देखना चाहते हैं कि किस पोजीशन पे है, ठीक है, कैन बी एनी पॉइंट। वाई जीरो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, वाई नॉट क्या है, स्टार्ट पॉइंट जिसमें हमने मास रिलीज किया खींच के, राइट। सो I hope it's clear. So in the next video, we are going to study further, इसको स्टडी करेंगे, राइट, इस इक्वेशन को स्टडी करेंगे, और इसका हम क्या निकालेंगे, जब आपको होमोजेनियस इक्वेशन दी होती है आप क्या सॉल्व कर सकते हो ना, अब तो जाहिर है आपको आता है ये चीज, आप सॉल्व करो, फिर आप स्टडी करो, तो एनालाइज कर सकते हो सिस्टम को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो वी आर एनालाइजिंग द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।